हेलो किड्स, हेलो पेरेंट्स। आज के वीडियो में मैं 2 लेटर वर्ड्स 3 लेटर वर्ड्स से बने सेंटेंसेस को रीड करना बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको शॉर्ट वावल साउंड्स, लॉन्ग वावल साउंड्स क्या होते हैं ये बताऊंगी, क्योंकि ये भी जानना हमें ज़रूरी है। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जब वो बच्चों को शॉर्ट वावल साउंड से रिलेटेड सेंटेंसेस पढ़ाएं तो शॉर्ट वावल साउंड्स पे स्ट्रेस दें, उनको बताएं कि ये क्या होता है। यहाँ देखिए, CAT कैट, TAP टैप, CAKE केक, FAME फेम। हम क्या देखते हैं, हम जब कैट को रीड करते हैं तो उसमें ए को ए की तरह पढ़ते हैं और टैप में भी ए को ए की तरह पढ़ते हैं। लेकिन जब हम केक को रीड करते हैं तो ए को ए ही रीड करते हैं और फेम में भी ए को ए ही रीड करते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि शॉर्ट वावल साउंड्स में हम ए को उसके साउंड की तरह प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग वावल साउंड्स में ए को उसके अल्फ़ाबेटिकल नेम ए की तरह ही प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो इस तरह से शॉर्ट वावल साउंड्स में हम वावल्स के साउंड को रीड करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन लॉन्ग वावल में उसके अल्फ़ाबेटिकल नेम को उसी की तरह प्रोनाउंस करते हैं। अब यहाँ देखिए, DIG डिग, SIT सिट। यहाँ पे आई को हम ई प्रोनाउंस कर रहे हैं, आई को ई प्रोनाउंस कर रहे हैं जो कि आई का साउंड ई होता है। लेकिन यहाँ पर PIE पाई, HI हाई, यहाँ पे आई को आई की तरह ही प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ये है आई का लॉन्ग वावल साउंड्स और यहाँ पे है आई का शॉर्ट वावल साउंड्स। अब यहाँ देखिए, JOG जॉग, POP पॉप। यहाँ पे हम ओ को उसके साउंड ओ की तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे TOE टो, GO गो, ओ को ओ की तरह ही प्रोनाउंस कर रहे हैं। सिमिलरली HUG हग, PUP पप। यू का साउंड अ होता है, इसलिए शॉर्ट वावल साउंड्स में हम यू को अ की तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं, HUG हग, PUP पप। लेकिन यहाँ UNIT यूनिट, USE यूज़, यहाँ यू को हम यू की तरह ही प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो ये इसका लॉन्ग वावल साउंड हुआ। TEN टेन, RED रेड, ई का साउंड ए होता है, यहाँ पे हम ई को ए की तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं। यहाँ BE बी, ME मी, ई को ई की तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो ये हो गया ई का लॉन्ग वावल साउंड और ये हो गया ई का शॉर्ट वावल साउंड। तो इस तरह पेरेंट्स अपने बच्चों को शॉर्ट वावल साउंड्स और लॉन्ग वावल साउंड्स में डिफरेंस करना, उनको आइडेंटिफाई करना बताएंगे। अब मैं आपको शॉर्ट ए साउंड वर्ड रीड करके बताऊंगी। शॉर्ट ए साउंड वर्ड, अ कैट, a fat cat. Sam has a fat cat. The cat sits on Sam's lap. Sam pets the cat. He is fat. Ram has a bat. It is my cap. A man ran with the fan. The lad has a pad. Sam has jam. Jim has a jar. He sat in a car. The man can have the pan. A man sat in a cab. He had a hat and a bag. I saw a man. Pat has a bat. The cat saw a rat. Short E sound word sentences. Ben loves his pet. He has a hen. The hen is wet. The hen is in the net. It has 10 eggs. A web
in a den. That hen is red. We met Ben. Ben fed his pet. Jen has a new pen. I have a new car. The car is red. I bet we go on that jet. Short I sound word sentences. A wig. Jim has a wig. The wig is big. He picks a pin to put it in a bin. This pin has a tip. Fix this zip. This ink pen has a big nib. Do not hit the lid. The pen is on the lid of the kit. Short O word sentences. A log. A dog. A dog on a log. Bob saw the dog. Bob saw the dog on a log. The box is on the top of the pot. Toys are in the box. The pots are in a row. There are dots on my dog. This is a boy. He got a new toy. He has a lot of toys in the box. He has a pet dog too. Short U sound word sentences. Monu have fun with his bus and pup. He has nut and bun. The pup took his bun. He ran after the pup to get his bun. My pup was in a hut. It was on the rug. Cup was on the tub. Go for a run. आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब